Hello, Manoharan. Shubham, are you there? Shubham, are you there? हाँ देख लिया अपडेट, लेकिन कोई फायदा नहीं, अभी पढ़ेंगे। अपडेट के चक्कर में क्या ही वो करना। और मैं तो तुम लोगों की तरह डरी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो पैटर्न में भी एग्जाम दिया था। लेट्स स्टडी, ओके मनोहरन, बिना डरे पढ़ते हैं। शुभम, आर यू देयर? सॉरी, कम अगेन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। A unique line for each gas, fingerprint. Okay, unique lines, emission and absorption. Unique line of emission and absorption for each gas, fingerprint. That's why it is called fingerprint. Fingerprint. Okay, fingerprint. Okay, emission and absorption, unique line for each gas. N equals to 1, ground state, lowest energy. Lambda is equals to hc upon del E. hc. E is equals to minus 13.6 z square upon n square, minus 13.6 z square upon everyone please don't text, okay? Let's study. Unique line for each gas, fingerprint. Okay, emission and absorption line for each gas, emission and absorption line for each gas, fingerprint. एमिसन को लागि पनि अलगै हुन्छ, एब्जर्प्सन को लागि पनि अलगै हुन्छ। ओके, सबै ग्यास को लागि युनिक प्याटर्न हुन्छ, त्यसै कारण यसलाई के भन्छ, फिंगरप्रिन्ट पनि भन्छ। n इक्वल्स टु 1, ग्राउन्ड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी केमा हुन्छ, ग्राउन्ड स्टेट हुन्छ। n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि लोएस्ट एनर्जी पनि त्यही बेला हुन्छ। lambda is equals to hc upon del, lambda is equals to hc upon del, lambda is equals to hc upon del. Lambda is equals to hc upon del E. hc upon del E. E is equals to minus 13.6 z square upon n square, z square upon n square, z square upon n square. Lambda is equals to 12,400 upon del E in electron volt, energy difference in electron volt, Armstrong mounts. Okay, hc 12,400 Armstrong, 12,400 Armstrong, 12,400 Armstrong. Emission spectrum को लागि change in
E initial minus E initial minus E final, E initial minus E final. Emission spectrum, del E is equals to E initial minus E final, del E is equals to E initial minus E final. Emission spectrum, photons release, photon emission spectrum मा के हुन्छ photon release हुन्छ, del E is equals to E initial minus E final. Del E is equals to E initial minus E final, E initial minus E final, E initial minus E final, E initial minus E final. E initial is equals to E final, E initial is equals to E final. Okay, एमिसन स्पेक्ट्रमको लागि है इनिशियलमा फाइनल माइनस गर्छ, इनिशियलमा फाइनल माइनस गर्छ केमा एमिसन स्पेक्ट्रममा. ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,400 डेली एनर्जी डिफरेंस, 12,400 डेली एनर्जी डिफरेंस. ओके, आर्मस्ट्रङमा हुन्छ. रिडबर्ग फर्मुला वेव नंबर 1 by lambda, 1 upon lambda. रिडबर्ग फर्मुला आर 1 upon lambda, 1 upon lambda is equals to R 1 upon NL square minus 1 upon NH square. NL, bro, let's not talk in break. Okay, thank you Shubham. R 1 upon NL square minus 1 upon NH square. Okay, wave number 1 upon lambda, 1 upon lambda, 1 upon lambda, 1 upon lambda is equals to R 1 upon NL square minus 1 upon NH square. Okay, Rydberg formula for hydrogen. ये क्यों Rydberg formula for hydrogen, Rydberg formula for hydrogen मान्छे लागे. Emission spectrum को लागि del E is equals to initial minus final. Okay, got it. Hc upon del E minus 13.6 it's Z square upon N square. Okay, electron volt मा हुनुपर्छ in electron volt. Wave number 1 upon lambda is equals to R 1 upon NL square minus 1 upon NH square, 1 upon NH square. Okay, lower orbit number, higher orbit number. Lower orbit number हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ higher orbit number हुन्छ. दुईटै हुन्छ, दुईटा केसेस हुन्छ, lower orbit number र higher orbit number. Okay, अस्तो फेरि ल lower orbit number र higher orbit number हुन्छ कि दुईटा केसेस हुन्छ. got it. Minus NH square. R is equals to 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse. This is Rydberg constant. 1 into 10 to the power 7 meter inverse. 1 into 10 to the 1 into 10 to the power 7 meter inverse. 1 into 10 to the power 7 meter inverse. 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. Dokasla something D. I don't know how to pronounce your name. I will reply, but अभी मैं पढ़ती हूँ. हाँ, उसके बाद ना जब ब्रेक 10 मिनट ब्रेक होगा ना तब मैं सब कुछ रिप्लाई करूँगी. अभी प्लीज पढ़ने दो. 1 upon L is equals to R 1 upon NL square minus 1 upon H square. Okay, Rydberg constant कति हुन्छ 1 into 10 to the power 7 meter inverse. Lyman Balmer Paschen bracket P fund. Lyman Balmer Paschen bracket P fund. Lyman ultraviolet region मा पर्छ. Lyman series ultraviolet region मा पर्छ. Lyman series ultraviolet region UV region मा हुन्छ. Balmer series visible मा Paschen bracket P fund infrared series infrared region मा हुन्छ. Paschen bracket र P fund infrared region मा हुन्छ. Okay, energy E1 कति हुन्छ भन त minus 13.6 electron volt. E2 is equals to minus 3.4 electron volt. E3 is equals to minus 1.51 electron volt, minus 1.51 electron volt. E4 is equals to minus 0.85 electron volt, and E4 is equals to minus 0.85 electron volt. E5 equals to minus 0.54 electron volt. E infinity is equals to 0. E1 is equals to minus 13.6 electron volt. E1 is equals to minus 13.6 electron volt. E1 is equals to minus 13.6 electron volt. E2 ma minus 3.4 electron volt, minus 3.4 electron volt. E3 ma minus 1.51 electron volt. E4 ma minus 0.85 electron volt.
E4 मा 0.85, E5 मा 0.54, 0.54 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ E5 मा, ओके। E4 मा माइनस 0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट। लाइक N1 N2 N3 N4 N5, ओके। N इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ। इन्फिनिटीबाट 5 मा आयो भने के हुन्छ, इन्फिनिटीबाट 5 मा झऱ्यो भने पी फन्ड हुन्छ, इन्फिनिटीबाट 5 आयो भने के हुन्छ, पी फन्ड हुन्छ। इन्फिनिटीबाट 4 मा आयो भने ब्राकेट, इन्फिनिटीबाट 3 मा आयो भने पास्ट टेन्स, इन्फिनिटीबाट 2 मा आयो भने बाल्मर, इन्फिनिटी मात्रै होइन, इन्फिनिटी र हायर जे पनि छ 3 4 5, 3 4 5 र इन्फिनिटीबाट आयो भने बाल्मर, ओके। लाइमनमा 2 3 4 5 र इन्फिनिटी, 2 3 4 5 र इन्फिनिटीबाट आयो भने के हुन्छ, लाइमन सिरिज हुन्छ। अल्ट्राभोइलेट रेडिएसन, अल्ट्राभोइलेट रिजन भन्छ, अल्ट्राभोइलेट रिजन, ओके। अल्ट्राभोइलेट रिजन, अल्ट्राभोइलेट रिजन, अल्ट्राभोइलेट रिजन, अल्ट्राभोइलेट रिजन, अल्ट्राभोइलेट रिजन, युभी रिजन, लाइमन सिरिज। A is 22, I guess. कर लूँगी, okay। Lyman series, ultraviolet region, 2 3 4 5 6, okay। Balmer series visible, 2 3 4 5 6, okay। 2 3 4 5 6 Balmer series, Lyman series, Balmer series, Paschen bracket B fund, 5 6 बाट नभए इन्फिनिटीबाट आफूभन्दा हायर बनाउँछ, बुझ्यो। लोवर हुनको जति छ त्यति हो, हायर जति पनि हुनसक्छ। फर्स्ट लाइन र लास्ट लाइन हुन्छ, एक अब लास्ट लाइन इन्फिनिटीबाट, एक्सक्युज मी। लाइमन सिरिज युभी रिजनमा पर्छ। इक्वल्स टु 2 3 4 5, ओके। एनएल लाइमनको वान हुन्छ, हायर 2 3 4 5 इन्फिनिटी हुनसक्छ। फर्स्ट लाइन र लङ्गेस्ट वेभलेन्थ, फर्स्ट लाइन लङ्गेस्ट वेभलेन्थ भन्छ, फर्स्ट लाइन लङ्गेस्ट वेभलेन्थ पनि भन्छ, फर्स्ट लाइन लङ्गेस्ट वेभलेन्थ भन्छ। लाम्डा अफ इमिटेड फोटोन, वेभलेन्थ अफ इमिटेड फोटोन इज इक्वल्स टु एचसी अपन डेली, एचसी अपन डेली, एचसी अपन डेली, लाम्डा hc upon daily, hc upon daily, h is equals to hc upon daily, h is equals to hc upon daily, okay। got it, got it, got it, got it, got it। h is equals to lambda is equals to hc upon daily. Lambda is inversely proportional to change in energy, lambda is inversely proportional to change in energy, wavelength is inversely proportional to energy gap, wavelength is inversely proportional to energy gap, wavelength is inversely proportional to energy gap, wavelength is inversely energy gap, okay। NL equals to 1, NH equals to 2 for longest lambda, for longest lambda energy gap must be lowest, okay। for longest lambda energy gap must be lowest, got that। एनर्जी ग्याप म्याक्सिमम कताबाट हुन्छ भने त जब हायरबाट लोवर n इक्वल्स टु 1 मा हुन्छ, हायरबाट n इक्वल्स टु 1 मा हुन्छ, के हुन्छ एनर्जी ग्याप सबैभन्दा यो हुन्छ, एनर्जी ग्याप सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, लङ्गेस्ट एनर्जी ग्याप मस्ट बी लोएस्ट, ओके। for longest wavelength energy gap must be lowest, wavelength लास्ट लाइन सीरीज लिमिट या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट र शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, NL इक्वल्स टु 1, NH इक्वल्स टु इन्फिनिटी, 1
upon lambda is equals to R, 1 upon NL square minus 1 upon NH square. Last line, series limit, shortest wavelength. Last line, series limit, shortest lambda. Last line, series limit, shortest wavelength. Last line, series limit, shortest wavelength. When the last line, series limit, shortest wavelength. First line, longest wavelength. Balmer series, visible region, first discovered. Balmer series was first discovered. Okay, first discovered. Balmer. First discovered. Balmer series was first discovered. NL equals to 2, NH equals to 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinity. First line, longest wavelength, 2, NH equals to 3. HC upon Delhi. Energy gap कमती, wavelength ज़्यादा. Last line, series limit, shortest wavelength. Energy gap की अनुसार first line, longest wavelength, energy gap decrease. Okay, longest wavelength, energy gap कमती, longest wavelength, energy gap कमती. Lowest energy gap, lowest ones. Okay. Series limit, shortest wavelength. And that's infinity Bastian IR reason. Okay, infrared reason. 1 upon lambda wave number, 1 upon lambda wave number, 1 upon lambda. This is wave number. Okay, wave number. This is wave number. Wave number. Wave number. Wave number. के भन्छ यसलाई वेभ नम्बर भन्छ. अस्ताक फेरि ल 3 NL 3 NH 4 5 6 7 infinity. Okay, first line, longest wavelength, NL equals to 3, NH equals to 4. Lambda inversely proportional. Lambda is inversely proportional to 1 upon Delhi.
Fast and IR reason. First line, longest wavelength. NL equals to 3, NH equals to 4. Last line, limit series. Limit series. Longest wavelength, lambda increase. P fund. First series, okay. Longest wavelength. Longest wavelength. First line. Last line, series limit, shortest limit. Exam important. Number of different transition or wavelength possible in emission spectrum when electron is in nth orbit. Yes. When electron अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है. When electron is in nth orbit. When electron is in nth orbit, number of different transition wavelength possible in emission spectrum. Number of different transition. When electron is in nth orbit, number of different transition or wavelength possible. In lambda possible in emission spectrum. Emission spectrum. When electron is in nth orbit. When electron is in nth orbit. When electron is in nth orbit, number of different transition or wavelength. Number of different transition or wavelength possible in emission spectrum will be n is equals to n minus 1 upon 2. n minus 1 upon 2. n minus 1 upon 2. Okay. Number of different wavelength possible line spectrum. Okay. N number of orbit number. N is orbit number. Energy gap increases from n1 to n infinity. Energy gap increases from, okay, when energy gap increases, lambda is, when energy gap increases, lambda gap, wavelength minimum. Energy gap increases, wavelength minimum. Energy gap increases, wavelength minimum. Okay. 1 to infinity. Energy gap increases from 1 to infinity. Energy gap increases from 1 to infinity. Minus 13.6 electron volt, minus 3.4 electron volt, minus 1.51 electron volt, 0.85 electron volt, minus 0.54 electron volt, n1, n2, n3, n4, n5. Energy gap increases. When energy gap increases, n1 to n infinity. Energy gap increases from n1 to n infinity. 10 to the okay, n1 or n2 को different for these are 10.2 electron volt. Minus del E is equals to h nu. Del E, energy of photon is equals to h nu. Del E is equals to h nu. Del E equals to h nu. कहाँ लिखा है? यहाँ पर. Del E equals to h nu. Energy of photon. Del E equals to h nu. Del E is equals to h. Atoms, nucleus, semiconductor, total.
उसका नहीं लिखा क्या? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर। 2 2 4 5 3 4 4 5 6 7 8 2020 2020 से ही तो पैटर्न चेंज हुआ है। E equals to h nu, energy of photon. H nu is equals to hc upon lambda. H nu is equals to hc upon lambda. Okay, del E is equals to h nu, energy of photon, which is equals to hc upon lambda. Hc upon lambda. Maximum frequency, minimum wavelength. Energy of photon. Maximum frequency, minimum wavelength. 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 Del E is equals to h nu, hc upon lambda. Maximum frequency, minimum wavelength. Energy gap increases from n1, n equals to 1 to n infinity. n minus 1 2. Maximum frequency, minimum wavelength. Energy gap daily maximum. Electron transition between higher to first orbit n equals to 1. अस्तक फिर होला. Energy gap del E maximum. Electron transition between higher to first orbit. Energy gap कहिले maximum हुन्छ जब electron को transition higher orbit बाट n equals to 1 मा हुन्छ. Higher orbit बाट n equals to 1 मा हुन्छ. हायर ओर्बिटबाट n इक्वल्स टु 1 मा इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन भयो भने यसलाई के भन्छ? एनर्जी ग्याप म्याक्सिमम छ भन्छ. ओके, n1 र n2 को बीचको ग्याप कति छ? del E 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट. 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ. 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट. त्यहाँदेखि फर्दर के फाइनल माइनस इनिशियल गर्दैछ त्यहाँनिर त. फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी ग्याप between two. Energy gap between two. Final minus initial. E energy gap between two orbit. E final minus E initial. For example, del E. Final minus initial. 2 orbit. Okay. Energy gap between two orbit. E final minus E initial. For example, del E.
minus 3.4 minus 13.6. 13.6 minus 3.4. 10.2 electron volt. 10.2 electron volt. Maximum energy gap Delhi equals to 10.6, 10.2 electron volt. 10.2 electron volt. Maximum, okay. Final minus initial to orbit. Energy gap is maximum. Electron transition from higher to first orbit. Transition between higher to first orbit. Okay, 11, 12. When del E max, when del E max, when energy gap, when del E energy gap, right? Del E when you go, when del E max, energy gap, ENERGY, energy. When energy gap is maximum, electron transition from higher to first orbit. Higher to first orbit. Orbit. Higher to first orbit. Higher to first orbit. Astaghfirullah. Energy gap. When energy gap maximum, energy gap is maximum, electron transition from higher to first orbit. N equals to 1. Release photon. Released will have maximum frequency and minimum wavelength. Maximum frequency and minimum wavelength, okay. In which transition wavelength of emitted photon will be maximum? Wavelength of emitted photon will be maximum. N equals to 2 to 1. N equals 3 to 1, 5 to 1. 3 to 2, 5 to 4, 4 to 3. 2 to 3, 3 to 4, 5 to 4, okay. In which transition wavelength of emitted photon will be maximum? Wavelength lambda max हुनुको लागि के हुनुपर्छ? एनर्जी ग्याप मैक्सिमम हुनुपर्छ, ओके. Del E. In which transition wavelength of emitted photon will be maximum? Wavelength maximum हुनुको लागि एनर्जी del E के हुनुपर्छ? मिनिमम हुनुपर्छ. del E कतिखेर मिनिमम हुन्छ भन त? del E higher to n equals to 1 भयो भने त maximum भइहाल्छ. यो केस हुनु हुँदैन. higher to n equals to 1 हुनु हुँदैन. यो कन्डिसन हुनु नै हुँदैन. This is not 3 to 2, 3 to 5 to 4. ये वाला सही है. 4 to 3. फाइव टू 4 काफ़ी इरिटेटिंग वाला था ये. For transition
Astaghfirullah, astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. For transition of an electron in H atom, 10 different wavelength is observed in its. For transition of electron in H atom, 10 different wavelength is observed in emission spectrum. Find out the number of orbit from which electron is fall down. N is equals to lambda. N equals to 10 different lambda. N equals to 10. Okay. N equals to n minus 1 upon 2. So 10 into 2 is equals to n minus 1. 20 is equals to n minus 1. 20 is equals to n 1 minus 1. No. 20 2 1 minus 1. So 2 ones are 2. No. 20 is equals to 4. 1 minus 1. 4 minus 1 3. No. n minus 1 upon 2 है ना होता इसमें 0 आंसर 2 minus 1 1. Four क्यों दे सकते हैं 5 minus 1 is equals to what? n minus 1 है ना अंता 1 minus 1 थोड़ी हो 2 minus 1 है 2 2 से 4 3 हो 16 minus 1 15 5 is 25 minus 1 इतना गंदा किया ना तूने कैलकुलेशन तो हक दिया ना n is equals to 10 so 20 is equals to n minus 1 divided by 2 sorry 20 is equals to 3 minus 1 2 6 है ना 20 is equals to 4 minus 1 12 okay 20 is equals to 5 minus 1 20 is equals to 5 was a 20 is equals to 20 so 5 n equals to 5 n is equals to 5 बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ मैं इसे अस्तगफिरुल्लाह 17 मिनट में शायद कर पाऊँ energy of nth state energy given plus minus 13.6 electron volt energy of nth state कहीं दिया है क्या nth state energy in ground state plus energy given energy in ground state plus energy given E nth energy in ground state plus energy given okay E nth state energy of nth state energy of nth state energy in nth state
energy in nth state, energy in nth state, energy in nth state. Energy in nth state plus energy given, 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 energy in nth state plus energy given. Hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of lambda is equals to, हाँ सुना है, नहीं आज काफ़ी वो लग रहा है, आज काफ़ी डर लग रहा है ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है. Hydrogen atom in ground state is excited by monochromatic radiation of lambda is equals to 975 Armstrong. Number of spectral lines in the resulting spectrum will be, number of spectral lines in the resulting spectrum, spectral lines in the resulting spectrum. In the resulting spectrum emitted will be number of spectral lines. Possible spectrum line. Spectral line. -1, okay. The hydrogen in ground state is excited by a monochromatic radiation. Resulting spectrum will be lambda is equals to hc upon delta. Lambda is equals to hc upon delta.
975 Armstrong. Number of spectral line in the resulting spectrum emitted will be. Number of spectral line in the resulting spectrum will be. Number of spectral line in the resulting spectrum will be. Lambda is equals to hc upon daily. Okay. Number of orbit. Orbit number. Five ones are 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 2 is 10. 'An electron of a stationary hydrogen atom passes from fifth energy level to ground level. An electron of a stationary H atom passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity that the atom acquires as a result of photon emission will be. An electron of a stationary hydrogen atom passes from fifth energy level n equals to 5 to a ground level n equals to 1. The velocity of the atom acquired as a result of photon emission will be the velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be the velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be. Astaghfirullah. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be. इसमें से हमें वेलोसिटी भी निकालना है ना, और ऑप्शन दिया है ये भयानक सा. जब भी कोई फोटोन रिलीज होता है तो इस डायरेक्शन में जाता है mb. रिटार्डिंग वेलोसिटी होता है, रिटार्डिंग मोमेंटम माइनस mb भी इधर जाता है. p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल. ये कंडीशन मान के चलना है. इनिशियल मोमेंटम हम लोगों का 0 था, p फाइनल. ओके,
Initial movement of a stationary hydrogen atom. Photon emitted. Positive negative direction और momentum will get conserved. Okay, mechanical. Okay, positive negative. Pi equals to pf. pf यहाँ से 0 आ रहा है सीधा सीधा ना. Initial pf कितना है हम लोगों का? pf is equals to माइनस p माइनस mv होता है ना. p माइनस mv. अच्छा मेरे को काटो. हैया ठीक है, क्वेश्चन अभी मत कर. मेरे कुछ तरफ जा. 3 क्वेश्चन यहाँ के इसमें. यहाँ से भी और कुछ है क्या? हाँ, इम्पैक्ट पैरामीटर सब कुछ यहीं से तो है. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, चार्ज टू मास रेशियो. ओके, चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन फॉर एटॉमिक, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर. रदरफोर्ड मॉडल. अच्छा, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 45 1 ही होता है ना. cot 45 1, cot 45 1 या cot 30 degree √3, cot 60 degree 1 by √3. It's around 1 AM. Ima, perhaps you need to rest. नहीं, मैं सो के उठी हूँ. मैं इवनिंग में सो गई थी ना. Discovery of nucleus, gold foil experiment, bombarded. Okay, gold foil डिस्कवरी ऑफ. ये बंदा कितना चालाक है. 1 मिनट. वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए स्टडी के सेशन में, लेकिन एमत बहुत चालाक बन रहा है. मैं सो जाऊंगी, फिर वो पढ़ेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा. अभी भी 5 मिनट है. सब लोग पढ़ाई करो, डोंट टेक्स्ट. Discovery of nucleus, gold foil experiment, bombarded alpha particle. Gold foil experiment against a bombarded alpha particle. Electron revolve around the nucleus. Atoms are mostly empty space. 1 in 8,000 alpha particle reflected more than 90 degree. 1 in 8,000. 8,000 में एक चाहिँ के हुन्छ? More than 90 degree, more than 90 degree deflection show गर्छ. More than 90 degree reflection show गर्छ. Theta is equals to angle between direction of alpha particle. Theta is angle between direction of alpha particle and the deflection. Correct. Small and positively charged dense center coiled nucleus. Small and positively charged dense center coiled nucleus. Size of the nucleus 10 to the power minus 15 हुन्छ. Size of the atom 10 to the power. Okay. Size of nucleus 10 to the power minus 15. 10 to the power minus 15. Size of nucleus 10 to the power minus 15 meter. Size of atom 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus. Okay, size of atom 5 लाख गुणाको डिफरेन्स छ. ओके, 5 लाखको डिफरेन्स छ. थिकनेस अफ गोल्ड फोइल 2.1 into 10 to the power minus 7. 2.1 into 2.1 into 10 to the power minus 7. 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. छोड्दै अल्फा पार्टिकल 5.5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको एनर्जीमा स्पिड कुद्छ. 5.5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. ओके, अल्फा पार्टिकलको एनर्जी 5.5. energy of alpha particle 5.5 mega electron volt. Mega electron volt. Meter. Only 0.14% deflected by more than 1 degree. more than 1 degree. ये 0 degree भएन, सेम डाइरेक्सनमा गयो भने त 1 डिग्री. पक्का ये 1 डिग्री लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया. देखो ये ही है, इसी डायरेक्शन में जा रहे. मोर देन 1 डिग्री तो इतना ही होगा. तो
90 डिग्री। फिर देखते हैं। 0.14% डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 1 डिग्री। ओके, ये तो मुझे नहीं पता, ये समझ में आ गया। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हीलियम का ही तो न्यूक्लियस है, He2+। अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल +2e, +2e। ओके, तो +2। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी v, रेस्ट +Ze, +Ze। डी डिस्टेंस। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एउटा पोइन्टमा आएर के हुन्छ, रेस्ट हुन्छ, बाँध्नु पर्छ। न्युक्लियसले रिफ्लेक्ट गर्छ नि त, न्युक्लियस अफ द एटम, कुनै पनि एटमको न्युक्लियसले। के अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटमको, यो गोल्डको आई गेस। किति गयो पेन्सिल, वेयर इज माई पेन्सिल? गोल्ड एटम, positive positive ripple। okay, +2e +Jd, atomic number into E, electron। kinetic energy, distance of closure, Ke is equals to K2e Ze upon D, 2e Ze upon D, kinetic energy। okay, D is equals to 2k Ze square, 2k Ze square, 2k Ze square upon kinetic energy, this is D। okay, velocity यो direction हो गयो पछाडि, इट्स ओके मा, इट्स ओके, कर लेगी तू। वेलोसिटी v पछिपट्टि fe, fe वेलोसिटी अगाडिपट्टि जाँदैछ, f पछाडिपट्टि आउँदैछ। के फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अल्फा पार्टिकल पोजिटिभ, न्युक्लियस पनि पोजिटिभ, रिपेल हुन्छ। Kze square, K2e Ze upon kinetic energy। okay, atomic number of element E, charge of one proton, E is charge of one proton, charge of one proton, charge of one proton, charge of one proton का छ? proton, charge of one proton, Z into total number of proton into charge in one proton, charge in one proton, total number of proton into charge in one proton, total number of charge in थर्ड को कंप्लीट हो गया सेशन। it's a D, then into total number of proton into charge in one proton, charge in one proton। okay, charge in one proton, charge in one proton, charge in one proton, charge in one proton। okay, जिस जिसको ब्रेक लेना है ले लो प्लीज, क्योंकि मैं भी लूँगी अभी। ओके, तो लेने से पहले इम्पैक्ट पैरामीटर एक बार देख लेती, फिर ब्रेक लेंगे 10 मिनट का। Impact parameter B, not many question in past 45 years। okay, perpendicular distance between direction of alpha particle and center of the nucleus, perpendicular distance between the direction of alpha particle and the center of the nucleus, direction of the alpha particle and the center of the nucleus, direction of the alpha particle and the center of the nucleus, perpendicular distance। okay, between direction, impact parameter कहाँ गया? Direction of alpha particle।
B is equals to 0. Impact parameter 0, then theta will be 180 degree. Theta is equals to 180 degree, impact parameter 0. Impact parameter 0, theta is equals to 180 degree. ये एकदम रट के रख लेना, ओके? इम्प्याक्ट प्यारामिटर 0 हुन्छ थीटा अगर 180 डिग्री छ भने. थीटा 180 डिग्री, इम्प्याक्ट प्यारामिटर 0, ओके? ब्याक आन्सर त theta is 180 degree, impact parameter 0. For larger value of B, जति ठुलो B, theta के हुन्छ त्यति सानो हुन्छ नि. Larger value of B, theta is equals to 0. Theta 0, larger value, theta 0, larger value of B, larger value of B, theta 0. And 0. Theta decreases, B increases, theta decreases, B increases, theta decreases. B increase when theta decrease, okay? Z E square upon kinetic energy cot theta by 2. Theta by 2. Angle of scattering, impact parameter. Angle of scattering, impact parameter. This theta decrease by B increase हुन्छ. Theta decrease by EV stopping, HV minus phi, HV minus phi. Third slot completed. Main break. किसी को कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे तो कुछ खाने का दिल कर रहा है. आ गया मैं तो ठूस के. क्या खाया? मैं तो ऑयली चीज़ खा भी नहीं सकती, एकदम नींद आती है फिर. मैंने भी तो अभी रिसेंटली खाया है, लेकिन फिर भी खाने का दिल कर रहा है. ये सॉस ना, केचप, टोमेटो केचप, मैंने ऐसे करके खा के ना इतना बना दिया. मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं खाती, और ये तो कौन ऐसे खाता है. मुझे भी कुछ खाने का दिल कर रहा है, लेकिन खाने लायक कुछ है नहीं. मुझे मुराई लेके रखना चाहिए ताकि मैं पढ़ के मूढ़ी खाऊं. लाइट भी होता है ना वो. अभी मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों. नहीं दिख सकता. दो मुझे देखने का दिल था, लेकिन वो है, क्या बोलते हैं उसे, सारी स्काई में हेज है, बादल ही बादल है. जाके मैं किचन से कुछ खाने के लेके आती हूँ, ओके?
खूब सारा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही है, मैं खा लेती हूँ, है ना, बचा के भी रखती हूँ। बहुत ज़्यादा बट आज गया, मन कर गया। किसने बताया वैसे तुम्हें? डोंट स्लिप अहमद। फिर मुझे लगेगा ना कि सिर्फ मैं ही पढ़ रही हूँ, तो पढ़ो ना तुम भी, पढ़ो ना अहमद, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे क्या? डोंट स्लीप, ड्राकुला बन जाऊँ? हाँ, will you be my bitch? ब्रेक खत्म हो गया, लेट्स स्टडी। रोज एलेक्स को बोलने के लिए बोलती हूँ ना कि एलेक्स मुझे आप ही बोलो, मुझे आप ही बोलो। आज अहमद को बोल रही हूँ कि मुझे आप ही बोलो।
पूछो, भेजो। मैं अभी नहीं सो सकती, मैं इवनिंग में सो गई ना। तुम लोगों ने तब पढ़ा होगा, मैंने तब नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे अभी पढ़ना है। ये स्लॉट 4 होगा ना, 4 स्लॉट 50 मिनट। सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है? क्वेश्चन सर्च करके क्यों पूछना, वैसे भी मुझे पता है एलेक्स मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, अभी इतना भी स्मार्ट नहीं है। ओके CP is greater than CV. अयो थर्मो, CV is greater than CV लिख दिया। तुम भी ना एलेक्स। लेट्स स्टडी। ओके अब खुद ही सॉल्व करना। ओके एलेक्स, ये मत तो सोने गया होगा, आई एम श्योर। करे स्टार्ट। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी अब। करेक्ट +4 और ना करेक्ट तो -1। ओके एलेक्स कब सोओगे? मुझे एक चीज़ अभी भी याद आई, एलेक्स तो सबको बॉस बॉस कहता रहता है ना, जब वो यानी से मिलेगा तो यानी को क्या बोलेगा? बॉस बोलेगा, बॉस 2 बोलेगा। है अभी 95 डेज बचा है भाई साहब, पढ़ लो सब लोग। सुपर बॉस बोलोगे? अच्छा अगर तुम AMU में जाओगे तो फिर तुम्हें सर बोलना पड़ेगा ना। वीकेस्ट फिजिक्स, अरे मेरा फिजिक्स सबसे वीकेस्ट दिखा रहा है।
वर्कआउट। मुझे सच्ची में ये एलेक्स से मिलने का दिल कर रहा है अब। देख इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी ना इन पर्सन। इफ आई बिकम वेरी ऑनेस्ट, शक्ल तो अच्छी नहीं है लेकिन पर्सनालिटी ना काफ़ी अट्रैक्टिव है ऐसे ही, बट इन पर्सन कैसे होगा? शायद इन पर्सन शक्ल अच्छी होगी और पर्सनालिटी खराब होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। एलेक्स क्यों पूरा हंस रहा है? तुम दोनों डिस्कॉर्ड में भी हो? शुभम तुम दोनों डिस्कॉर्ड में भी हो? जल्दी बोलो, मुझे फिर सॉल्व भी करना है यहाँ पर। ओह, तो तुम्हें देखा वहां पर हंस रहा था। कैम ऑन किया है? उस टाइम भी ऑन ही रहती नहीं, उस टाइम ऑन नहीं रहती, उस टाइम ऑफ करती। तुम नहीं करते थे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू स्टडी अ लॉट। मुझे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। कोई बात नहीं, अगर यानी ने परमिशन दिया तो वी विल मीट, नहीं दिया तो फिर अगले जन्म में देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टडी अभी। लेट्स दफ्तफी दुतफी लेट्स दुतफी। व्हाट इज दैट? दुतफी। भाई साहब, ये एलेक्स ना इतना कूल बनने की एक्टिंग करता है ना मेरे सामने।
आदर्श भाऊ कहाँ है? मुझे नहीं पता यार, उसने तो ना यूट्यूब से भी सारा वीडियो हाइड कर लिया है। Taking the Bohr radius A equals to 53 pm, the radius of lithium ion on its ground state on the basis of Bohr model will be about ground state 1 by square. ये तो होगा ना 53 divided by 3. The value of ionization energy of hydrogen atom is I of hydrogen atom, ionization energy of hydrogen atom 3.4. Hydrogen atom minus 13.6 Z upon n square. One square minus 13.6 electron volt. The energy of the ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6. The energy of the first excited state will be फोर डिवाइडेड बाई 4 होगा ना। Z स्क्वायर 1 ही तो होगा। n को स्क्वायर Z स्क्वायर n स्क्वायर तो 4 4 2 6 से 12 2 7 से 14 4 ओके 2 1 से 2 2 3 से 6 2 3.35 over n equals to 2 and 4. In an atom the ratio of radius of orbit of electron to the radius of nucleus is the ratio of radii of the orbit of electron to the radius of nucleus is the ratio of radius of orbit in a Bohr model hydrogen atom the central 4 pi epsilon naught E square हुन्छ माथि। For an electron in second orbit of hydrogen, what is the moment of momentum as per h by 2 pi? The ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series will be the ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series. Minimum wavelength of Lyman. The ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series. First line 1 upon Lyman को 1 को square 0 okay. R by 1 okay. Lambda is equals to 1 upon R हुन्थ्यो ना। पाल्मर को मिनिमम वेवलेन्थ हो नि त छोड
2 को square 4 4 4 upon R Palmer series. One by 4 0 point 4 to Z 0.2 वाला दो में है 2 525 वाला. Assertion: Bohr model cannot be extended to two or more electron atoms. Reason: each atom in the atom interacts not only with the positive charge nucleus but also with the other electron. Bohr model cannot be extended to two or more electrons. Correct. Each electron in an atom interacts not only with the positive charge nucleus but also with the other electron. According to second postulates of Bohr model, the angular momentum of nth possible orbit n h by 2 pi. Lyman series mark the transition from higher level to following level. Question A को P okay P. Question series Lyman Balmer question 3 R D को R C को Q D को ब्रैकेट को Lyman Balmer question bracket 4 S. In the electron in a hydrogen atom, if the electron in a hydrogen atom jumps from an orbit with level n1 equals to 2 to an orbit with level n2 is equals to 1, higher to lower, the emitted radiation has a wavelength given by ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, लैम्डा इज इक्वल्स टू hc upon orbit with level n1 equals to 2 and orbit. Atom as a whole is electrically neutral. Okay, atom contains equal amount of positive and negative charge. The first model of atom was proposed by J.J. Thomson. The minimum magnetic dipole moment of electron in hydrogen atom is magnetic moment. According to Bohr's atomic theory, electrons do not move. Nucleus is negatively charged. Electron radiates energy in stationary orbit. Electron emits or absorbs energy during transition state. Electron radiate energy in stationary orbit. ये भी लग रहा है radiates energy. In which of the following Bohr's atom orbit and a hydrogen atom emits the photon of lowest frequency? Lowest frequency. Energy gap. Max high frequency. Energy gap minimum. 4 to 3. Energy gap minimum. Energy gap minimum. के minimum छ frequency. If the ionization potential of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, its energy in the n equals to 3 is approximate. If the ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt, its energy in the n equals to 3 is approximately 13.6. Z square upon n square ना
9 और 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तूने सही किया है, वो जो लास्ट में किया है ना, मुझे पता है, एक ही गलत हुआ बस। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 8 9 10 11 12 4 स्किप किया, एक गलत। ओके मतलब कि 10 मिनट में तूने किया कितने क्वेश्चन सॉल्व? 1 3 1 3 3 2 6 3 3 9 10 11 12। हाँ सही तो है। Taking a Bohr radius 53 pm. The radius of lithium ion in the ground state is R is equals to 0.529 into n square upon z. R is equals to 0.529 into n square, ground state 1 upon 3. $53. 53 into 3 जितना होगा वही तो होगा ना। 3 3 से 9, 3 3 से 15, 159 पिकोमीटर। गलती से मिस्टेक हो जाता है ना। गलती से मिस्टेक। The Bohr model of hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb's attraction between the proton and the electron. The E naught is the radius of the ground state orbit m. E तुम्हें नहीं पता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास भी तो नहीं पता है, पता कर सकते हैं लेकिन। E naught equals to 53, n equals to 1 for the ground state lithium ion, z equals to 3. Okay, n square h square। आयु ये कब था? ये कहाँ से था? मुझे नहीं पता था ये वाला था। R is equals to n square h square upon 4 pi square m k z square। एटीन पिकोमीटर था। अच्छा ये वाला सीखना पड़ेगा। ये वाला भी सही है ना, तो वाला 13 point। The value of ionization energy of hydrogen atom, the value of ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy of ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of the first excited state will be, the energy of the ground electronic state of a hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of the ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of the first excited state will be, first excited 2 होगा, z square upon n square, ऊपर सही रहेगा वही, n square divided by minus 13.6 divided by 4. The energy of the first excited state, अच्छा n equals to z square upon n square minus 13.6 upon z square 1 का square, टू को स्क्वायर 1 था। 4 1 4 46 4 3 से 12 3.4 1 4 46 4 12 4 4 6 3.4 माइनस 3.4। हाँ ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। ई इक्वल्स टू तुम्हें फर्स्ट एक्साइड एन इक्वल्स टू 2 मा कति हुन्छ नि त? 3 minus 3.4 होइन?
अभी इतना जोर जोर से रटा कोई फायदा नहीं था. In an atom, the ratio of a radius of orbit of electron to the radius of nucleus is. In an atom, the ratio of radius of orbit of electron to the radius of nucleus. In an atom, the ratio of radius of orbit of electron to the radius of nucleus is 10 to the power 5. Radius of the orbit of electron to the radius of nucleus is. Okay, अच्छे से करना है इमा. mv square upon r is equals to 1 by 4 pi epsilon naught e square upon q1 q2 upon r square. ये मर गया. तो यहाँ से आएगा v square is equals to e square upon 4 pi epsilon naught e naught. ओके m. ये जब यहाँ पर आएगा तो v is equals to e upon under root 4 pi epsilon naught a naught m. 4 pi epsilon naught a naught m. Okay. For an electron in the second orbit of hydrogen, what is the moment of momentum as per Bohr's model? For an electron in the second orbit of hydrogen, the moment of momentum as per Bohr's model, n h by 2 pi. 2 cancel by. Okay. The ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series is 0.25. Okay. ये कैसे किया पता है ना. लाइमन का पहले निकालो. मिनिमम वेवलेंथ बोला है. मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप सबसे कम होगी. मिनिमम वेवलेंथ मतलब कि सीरीज लिमिट की निकालना पड़ेगा ना. 1 बाई लाइमन इज इक्वल्स टू आर. इसको कितना होगा 1 अपॉन लाइमन का तो एक ही रहेगा ना 1. तो लाइमन का रहेगा 1 अपन आर और बाल्मर का रहेगा तुम्हारा 4 अपन आर. देखो कैसे 1 अपन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू आर 1 अपन 2 को स्क्वायर इज इक्वल 4. 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा b इज इक्वल्स 4 अपन आर है ना. हाँ 4 अपन आर ये तो होगा. और यही तो करने के लिए बोला है. ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा तो दो दो कैंसिल. 1 बाई 4 0.25. हाँ समझ गई. बोर स्किप किया था. अच्छा ओके. बोर मॉडल कैन नॉट बी extended to 2 or more electron atom. Reason: each electron in the atom interacts not only with the positive charged nucleus but also all other electrons. If assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. assertion reason आया ना तुम्हें खल्लास. यही पर तो लिखना था. ई दुख काहे खत्म नहीं होता बे. Each electron in atom interacts not only with the positive charged nucleus but also with the other electron. यही कहीं लिख देती हूँ. मेरा दिल नहीं करता है. Cannot be extended to or more electron. Each electron in the atom interacts because each electron in the atom interacts not only with the positive charge but also with other electron. अदर इलेक्ट्रॉन. मैंने कितना सारा क्वेश्चन किया था. इसमें से 5 गलत हो गए ना. अरे इतनी कम 17 क्वेश्चन ही तो किया था. 17 में भी 1 2 3 4 स्किप और 1 गलत. 12 सही किया. ये गलत है माँ. बायो में होता तो पूरे के पूरे सही होता.
According to second postulates of Bohr model, the angular momentum of nth was possible. अच्छा ये तो यही है ना, n h/2 pi. According to second postulates of Bohr model, the angular momentum of nth possible orbit of hydrogen atom is given by n integral multiple of h/2 pi. Integral multiple of h/2 pi. अच्छा इसका दो postulate है क्या? हाँ अयो देखो तो तीन postulate है क्या? दो तीन postulates है. तो एक तो electron revolve around nucleus in a certain fixed radius called stable orbit. Electron can revolve around nucleus in certain fixed radius orbit called stable. Okay, stable orbit. Electron can revolve around nucleus in certain fixed radius orbit called stable orbit. For a stable orbit, L equals to nh/2 pi, nh/2 pi, nh/2 pi, nh/2 pi. Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to transition of electron. अभी तू नाटक करने लगी ऐसा उसने बोला ना. हाँ okay. Frequency of photon corresponding to transition of electron. H nu is equals to EH minus EL. Energy from higher state to energy from lower state. 0.529 n square upon z. 0.529 n square upon z. नहीं हाँ 2.19 into 10 to the power 6 into z upon n. If the electron in a hydrogen atom jumps 3r, अच्छा. If the electron in a hydrogen atom jumps from an orbit with level n1 is equals to 2 to an orbit level n2 is equals to 1. चाहिए तो कर सकती थी माँ शायद. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता ना जब करते हैं. 1/r 1/. If the electron in a hydrogen atom jumps from an orbit, lower orbit, 2 को square minus 1/1 को square. Wavelength will be 4. 1/4 minus 1/1. कुछ नहीं होगा इमा तेरा नहीं पड़ेगी ना तो कुछ नहीं होगा. 1/λ is equals to r. यहाँ पर तुम्हारा रहेगा 4. एलसीएम 4 ही रहेगा ना. और ऊपर का 1 4 minus 3. सच्ची में ये ऐसा हो गया क्या? 4 रहेगा ना ऊपर का तो मल्टीप्लाई होगा ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो जैसा कुछ. अरे मेरा तो ना नहीं होगा यार. 3/4 minus 3/4. ओके. लैम्डा इज इक्वल्स टू वो भी नेगेटिव में आ रहा है भाई मेरा. क्या करूँ मैं खुद का. ऑप्शन तो ऐसा है भी नहीं. लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3. देखो क्या आ रहा है. करना तो यही था ईमा. बाकी तूने क्या किया मुझे नहीं पता. हायर को लोअर, लोअर को हायर तो नहीं कर दिया ना. शायद वही किया है मैंने. 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n h स्क्वायर. तो यहाँ पर 2 वाले रख देना. n1 2 दिया है स्क्वायर. 1/2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस ना. तो इसमें होगा तुम्हारा 1/1 माइनस 1/4. 4 माइनस 1 3 यहाँ पर r रहेगा ना. 1/λ. लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3r. 4/3r 4/3r. हाँ ये तो तुझे आता था ईमा. देख बुक मार्क.
1898. Okay. 14. The minimum magnetic dipole of electron in hydrogen atom. Minimum magnetic dipole moment. EH/4πm. ये तो हमको नहीं पता था सचिन, ये हमको नहीं पता था. मिनिमम हार्ड में आता है ये क्वेश्चन. मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. The minimum magnetic dipole moment. The minimum magnetic dipole moment of electron. Dipole moment of electron in hydrogen atom. Electron in hydrogen atom is EH. EH upon 4πm. कैसे हुआ ये दिखाओ तो हमको भी. Magnetic dipole moment of electron in an atom is given as m equals to NEH upon 4πm. भाई साहब क्या है, मेरे को रोने का दिल करता है. m equals to EH upon NEH. हाइड्रोजन में n तक ही 1. EH upon 4πm. अच्छा. बोर मैग्नेटन. m equals to EH upon 4πm. 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 ये वाला नहीं आएगा शायद. EH upon 4πm. Magnetic moment. Minimum magnetic dipole moment. Minimum magnetic dipole moment of electron in H atom. कितने चीज याद रखेगी, नहीं याद हो पाएगा तुझे. वैसे भी तो ये कैसे याद करेगी इतना सारा. अगर कंसेप्ट ठीक है तभी होगा फिजिक्स. तो देखो अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जाम तक कैसे याद रखेगी. नहीं होगा ही मैं याद. मत पढ़. एक बार लिख के देखती ना. पाई एम ई अपन 4πm. EH. वो सही तो किया. EH अपन 4πm. 4πm. According to Bohr's atomic theory, electron radiates energy in stationary orbit. अच्छा ये वाला गलत किया था. According to Bohr's atomic theory, electron emit and absorb energy during transition state. Bohr की atomic theory है. According to Bohr's atomic theory. According to Bohr's atomic theory. Bohr's atomic theory. Bohr's atomic. Electrons and emit or absorb energy during transition state. BOHR. Bohr's atomic theory. THEORY theory. Electrons emit and absorb theory. Electrons absorbs and emits. Electron absorbs and emit. Electron absorbs or emit energy during transition state. Energy during transition state. State. Okay. Electron absorbs and emits energy during transition state. Emits or absorb energy during transition state. I think raining outside. टैंकी फुल हो गया है. प्रथम हाई. Electron absorbs and emits energy during transition state. Bohr's atomic theory. Electron absorbs and emits energy during. Electron emit
electron absorbs or emit energy during transition state. Bohr's atomic theory रहेछ के रहेछ थाहा भयो हैन Bohr's atomic theory. Electron absorbs and emits energy during transition state. Electron absorbs and emits energy during transition state. I hate him. Initial minus final. Which of the following Bohr orbit n equals to n orbit a hydrogen atom emits the photon of lowest frequency? Lowest frequency को लागि energy gap पनि हेर्नुपर्छ लो हुनुपर्छ नि त 13 point n equals to the ionization potential of hydrogen atom is minus s is 13.6 electron volt. Its energy in n equals to 3 is इतना रोने से कुछ सॉल्व नहीं होता ना Three, 4 is 12, 3, 4 is 3, 3, 4 is 12, 3, 5 is 7, 3, 6 is 18, 3 4 is 15, 3 1 is 3, 1.5, 3 5 is 15, हाँ वही आएगा 3 5 is 15, 3 5 is 15, 511 electron volt. फिर से एक और स्लॉट करते हैं ना The value of potential energy, kinetic energy and total energy of the electron in the fourth orbit of hydrogen atom respectively are fourth atom अच्छा potential energy, kinetic energy and fourth में total energy होगा TE total energy fourth orbit में 0.85 पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी 0.85 वाला जहाँ पर है यही वाला सही है The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove an electron from the second orbit of hydrogen is the ionization energy of hydrogen is 24 point something है ये तो किया था पहले none of this
The initial energy of hydrogen is N 0 upon n square 4. थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है. Which of the following spectral series of hydrogen atom is lying in visible range of electromagnetic Which of the following spectral line of hydrogen atom is helium का बोला है ना, हाइड्रोजन का तो none of this नहीं, यही होगा. Which of the following spectral series of hydrogen atom is lying in visible range of electromagnetic wave? Bohr. Total energy of electron in hydrogen atom is negative. It is bound to the nucleus. Large angle of scattering of alpha particle led to the discovery of atomic nucleus. हाँ. Entire positive charge of atom is concentrated at the central core. If hydrogen atom and lithium plus ions both are in second excited state, LH. If LH and Li are the respective electronic angular momentum. ये तो मुझे मत पूछो अभी. What is the energy of the electron revolving in the third orbit expressed in electron world? Third orbit minus 1 point. If E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the nth orbit of helium atom will be. If E is the energy of helium atom, 4 E by 4. 4E. If E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the energy of nth orbit of helium atom will be. The energy of nth orbit of helium. Z atomic number Z square upon N naught and the same answer 4E 4E. For the scattering of only the nucleus of the atom is responsible. Nucleus is very heavy in comparison to electrons. An electron makes transition inside a hydrogen atom. The orbit angular momentum of electron may be changed by h lambda by integral multiple of h. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है ना. अरे मैं भूल गई. h by 2 pi n h by 2 pi. Orbital angular momentum of electron inside hydrogen. In an experiment of alpha particle scattering, alpha particles are directed towards a gold foil and detectors are placed in positive blah blah blah. If in an experiment alpha particles are directed towards a gold foil and detectors are placed in position P, Q, R. What is the distribution of alpha particle as recorded? P, Q, R. Q में ज़्यादा, P में कम. P में few, Q में some, R में most. अभी R में का most हो. R में few.
Qma na Rma none, Qma none, Pma all no, Pma most, Qma some, Rma few. हाँ यही वाला ही सही है, फोर्थ वाला ही. Rutherford atomic model could account for stability of atom, origin of spectra, the positive charge central core of an atom, concept of stationary orbit. According to Bohr's model, the radius is related as n square upon z. Radius, हाँ n square upon z. If which of the following is not correct about Bohr's model of hydrogen atom? An electron in atom. What? Which of the following is not correct about Bohr model of hydrogen atom? An electron in an atom could revolve in certain stable orbit without the emission of radiant energy. यही तो not correct है. Electron revolves around nucleus only in those orbit ln nh by 2 pi. When electron makes a transition from one of the stable orbit to lower orbit, then a photon emitted with energy h nu is equals to E final EF minus initial. Bohr model is applicable to all atom. अरे बोर मॉडल सारे एटम में, हाँ शायद. An electron atom revolves in a certain stable orbit without the emission of radiant energy. इसको ना फ्लैग कर देते हैं क्योंकि चांसेस है. Okay, no work is done when an electron completes a circular or elliptical orbit around the stationary nucleus of an atom. Electrostatic force is a conservative force. नहीं पता ना मुझे. If Bohr model of hydrogen atom, which of the following is quantized? In Bohr model of hydrogen atom, which of the following is quantized? Linear momentum of electron, linear velocity of electron, angular momentum of electron, angular velocity of electron. Hydrogen atom are excited from ground state to principal quantum number 4. The number of spectral line absorbed will be n. n minus 1. Okay, so 4. 4 minus 1, 4 4 0, 4 0, 12. 12 divided by 2, 6. In which region of electromagnetic spectrum does the Lyman series of hydrogen atom lie? Ultraviolet. A hydrogen-like atom emits radiation of frequency 80 Hz. 221, the frequency emitted from. अभी नहीं कैलकुलेट करती हूँ ये तो. The minimum energy to ionize an atom is the energy required to. The minimum energy to ionize an atom is the energy required to remove an outermost electron from the atom. The electron of a hydrogen atom revolves around the proton in a circular orbit of radius ℏ with a speed ℏ. The current due to the circulating charge is proportional to. Electrons in the atom are held due to Coulomb force. The atom is stable only because the centrifugal force assertion. For an electron in the second orbit hydrogen, the angular momentum is h by. अरे h by pi लगाना था मुझे. कितना किया? हाँ यही तो h by pi लगाना था, स्किप हो गया. अच्छा देख सारा सकते हैं, मुझे नहीं पता था यार. नहीं देख सकते, कोई नहीं सही. h by pi तो लगाना था मुझे.
2 times total energy, potential energy is equals to 2 times total energy है ना, potential energy 4th orbit is minus 0.25, 2 into 0.25, 5 ones of 5 factors are 10, 10 को 0 1 है तो क्या 2 8 6 1.7 minus 1.7 6 electron volt. Total energy is equals to minus kinetic energy. Total energy is equals to potential energy upon 2. Total energy is equals to ionization energy, वो भी माइनस में, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, दोनों में कुछ भी हो सकता है. The ionization energy of a hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove an electron from the second orbit of hydrogen atom. Hydrogen atom is in ground state. 975 Armstrong. Hydrogen atom in ground state. Ionization of helium atom. First ionization. इसमें तो किस होते था? The ionization of the hydrogen atom is इति. The energy required to remove an electron from the second orbit of hydrogen. Minus of IE, okay. 13.6 Z square upon N square. Astaghfirullah, please help me Allah. N equals to 2, तो 4 होगा ना. 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 4s are 16. हाँ, तो यही तो हुआ 3.4 इलेक्ट्रोन वोल्ट. माइनस माइनस हो गया ना, कटिंच माइनस माइनस प्लस. अस्तगफिरुल्लाह. Which of the following spectral series of hydrogen atom is lying in the visible range of electromagnetic wave? Balmer, obviously. Then we have total energy of electron in a hydrogen atom is negative. It is bound to the nucleus. Total energy of electron, ये तो कहीं लिखा है यहाँ पर. Total energy of electron in a hydrogen atom is negative. It is bound to nucleus. Negative because bound to nucleus. Okay. P by Q. Okay. Minus. Okay. Minus. Total energy minus because it is bound to nucleus. Because total energy of electron in a hydrogen atom is negative. Total energy of electron in a hydrogen atom is negative. Total energy of electron in a hydrogen atom is negative. It is bound to nucleus. Large and scattering alpha particle led to the discovery of atomic nucleus. Large angle of scattering alpha particle led to the discovery of atomic nucleus.
एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसिडर्ड। ओके, ये तो हो गया। 1 का क्या वो हुआ गया, 2 का भी हाँ हो गया। अब 6 रहेगा ना। द हाइड्रोजन, ये तो आराम से पढ़ के कर बहन। 2 उधर गलत हो गया, नहीं होता है मुझसे, नहीं होता है। This session is done. A hydrogen atom and lithium ions are both in second excited state. If LH and L hydrogen, second excited state, angular momentum LH and Li, angular momentum. A hydrogen atom and a lithium 2 plus ion both are in second excited state. N equals to 3 छ हाइड्रोजन को पनि लिथियम को पनि। ओके, this okay, LH angular momentum L equals to N H by 2 pi 3H by 2 pi, दोनों का ही 3H by बराबर होगा, 3H by 2 pi इसका भी होगा। L equals to N 3H by 2 pi। LH is equals to Li. Okay, and EH and ELI, their respective energies then. Okay, EH is equals to minus 13.6 into क्या करें, -13.6 इंटू, जिसको ब्रेक लेना है ले सकते हो। ओके, ये सेशन कंप्लीट हो गया लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ना है। EH इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ELI इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये तो 3 इतना तो सेम ही रहेगा ना, ये रहेगा, यही रहेगा। ओके, 3 स्क्वायर होगा, इसका 1 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा। तो लिथियम का ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली, लिथियम का ये केस है। एंड ELI ग्रेटर देन EH। सही सही फरमाया, सही फरमाया, एकदम सही फरमाया। What is the energy of electron revolving in third orbit expressed in electron volt? Minus 1.51 electron volt. जेड, यही तो फर्क है। For the scattering of alpha particle at larger angle, only the nucleus of atom is responsible. Nucleus is very heavy in comparison to electron. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. अच्छा, for scattering of alpha particle large angle, for the scattering of alpha particle at large angle, only the nucleus of the atom is responsible. हाँ, nucleus is very heavy. हाँ, तो पॉजिटिव रिपेल होता है ना, ये क्या होता है, न्यूक्लियस इज वेरी हैवी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। अयो इमा, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है ना, इतना वेरी इजी था ये क्वेश्चन। शर्म कर बहन, शर्म कर। An electron makes transition inside a hydrogen atom. The orbit angular momentum of the electron
may change by सिली मिस्टेक है बहन सब कुछ ये फिर भी गलत होगा ओके In an experiment of alpha particle scattering, alpha particles are directed towards gold foil and detectors are placed in the position P, Q and R. What is the distribution of a particular recorded at point P, Q and R? Alpha particles. R say none. None. Some. P से few. हाँ R से most. अरे वो वहाँ पर कहाँ न्यूक्लियस दिखाया है पागल. R से most जाएगा. हाँ बिच्छू बीच से most जाएगा. Some ये few है. P few Q some. हाँ most यही तो सही था. Most. Some few. Rutherford model could account for the positive charges. Could account for the positive central core of an atom. N square by Z. According to Bohr's model, the radius is related to n square upon Z. N square upon Z. Bohr model is applicable to all atoms. नहीं. An electron in an atom could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy. Okay, energy radiant नहीं करेगा without the emission of radiant energy. Without the emission of radiant energy. Without the emission of radiant energy. Question number 15. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit around the stationary nucleus of atom. Electrostatic force is conservative force. If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, work done when an electron completes a circular or elliptical orbit around the stationary nucleus of an atom. Electrostatic force is conservative force. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit around the stationary nucleus. Okay, no work done within. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit around the stationary nucleus of an atom. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit around the stationary nucleus of an atom. No work is done when an electron completes. केही वर्क डन हुँदैन अगर इलेक्ट्रोनले एक कम्प्लिट पाथवे सर्कुलर होस् या इलेक्ट्रिकल कम्प्लिट गर्यो भने बुझ्यो पाथवे कम्प्लिट गर्दाखेरि केही वर्क डन हुँदैन. अरे साइक्लिकमा वर्क डन तो वैसे भी जीरो होता है. काहे ऑर्बिट अराउंड द स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. Which is the following quantized angular momentum of electron. Okay, हाइड्रोजन एटम are excited from ground state to principal quantum number 4. The okay ये तो वो spectral line n minus 1 upon 2. Capital N is equals to n minus 1 upon 2. Electromagnetic spectrum 11 series of hydrogen lies ultraviolet rays. Okay, 17 18 19 20. हाँ 20 40 questions. 40 क्वेश्चंस बस 40 किया. ये वाला फिर से करना है 19 वाला. ओके 15 वाला क्या था. हाँ नो वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स अ सर्कुलर और एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके ऑल सम फ्यू है ना. मोस्ट सम फ्यू. हाँ ऑल नहीं बोलना था फिर से ऑल बोल दिया. इंग्लिश हाँ ये वाला फिर से करेंगे. 20 वाला क्या था. द मिनिमम एनर्जी टू आयनाइज एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the outermost electron from the atom. The minimum energy to ionize an atom is the energy required to remove an outermost electron from the atom.
22 वाला भी गलत हो गया. इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम फोर्स. नो दे आर नॉट. हाँ ट्रू ही है. द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू कूलम लॉ इज बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मुझे तो लगा कि मैंने नहीं करा है. वेरी हार्ड वेरी हार्ड. अच्छा 3 रह गए हैं. ये कौन सा वाला 4th था ना. SLOT slot completed. एस भी तू है क्या. है ना. है क्या भाई. आर यू देयर. आर देयर शुभमन गिल. है मतलब है. मैं ये ना सेशन एंड करके फिर से आई. ओके you'll also sleep. एलेक्स कितने बजे उठता है. कल जब आएगा तब पूछ लेंगे. ओके किसने. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.